Very good, all of you. Welcome to my channel Civil Engineering Notes, changing the way of learning. स्वागत है आप सबका। अब हम बात करने जा रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल पार्ट 3 लेके। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा टिम्बर और कुछ छोटा छोटा बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट। तो चलिए अभी स्टार्ट करता हूँ। टिम्बर बिल्डिंग मटेरियल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। It is the wood suitable for building or engineering purposes, and it is applied to trees measuring not less than 0.6 meter in girth. The cross section of an exogenous tree is shown in figure. In this figure, the cross section of a tree is shown here. The center part of a tree is called pith. इसके बाद हार्डवुड, उसके बाद सॉफ्टवुड, उसके बाद मेडुलरी रेज, कैम्बियम लेयर, इनर बार्क, सबसे लास्ट में आउटर बार्क। ये एक एक बिल्डिंग मटेरियल का एक एक लेयर है। टिम्बर का एक एक लेयर है। इसको ध्यान से देखिए पिक्चर को। ये सभी का डेफिनेशन इधर दिया हुआ। Fifth, it is the innermost center portion or core of the tree. जो सेंटर का इनर मोस्ट पोर्शन, सबसे इनर का। एनुलर रिंग क्या है? दीज आर दी कॉन्सेंट्रिक सर्कल और रिंग ऑफ वुडी फाइबर अराउंड द पीथ। जो पीथ का अराउंड चारों साइड में एनुलर रिंग रहता। हार्टवुड, इट कंसिस्ट ऑफ द इनर एनुलर रिंग्स around the pith. Sapwood, it consists of the outer annular ring. Heartwood, inner annular ring लेके बनता। Sapwood, outer annular ring लेके बनता। Cambium layer, it is a thin layer just below the bark and not converted to sapwood yet. Medullary rays, these are thin radial fiber extending from the pith to cambium layer. पीथ टू कैम्बियम लेयर। यहाँ पे देखिए पीथ ए सेंटर पे, एक कैम्बियम लेयर यहाँ पे। पीथ एंड कैम्बियम लेयर का जो पार्ट है ना, इसको मेडुलरी रेज बोलता है। दीज आर द थिन रेडियल फाइबर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पीथ टू कैम्बियम लेयर। इनर bark, it is the inner skin or layer covering the cambium layer. Outer bark, it is the outermost cover or skin
स्टेम, सबसे बाहर का स्किन और कवर वो बोलता है आउटर बार्क। अभी आया सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सीजनिंग ऑफ टिम्बर मतलब सीजनिंग करना पड़ता टिम्बर को। ग्रीन ट्रीज को कटिंग करने के साथ साथ उसको यूज नहीं कर पाता, उसका अंदर जो मॉइस्चर रहता उसको सुखाना पड़ेगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग टिम्बर और रिमूविंग मॉइस्चर और सैप presently in a freshly felled trees, actually green trees, is called seasoning of timber. Seasoning of timber. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं और एक बार देखिए, the process of drying timber, टिम्बर को सुखाना और रिमूविंग मॉइस्चर, मॉइस्चर को रिमूव करना पड़ेगा और सैप कहाँ पे रहता, प्रेजेंट इन ए फ्रेशली फेल्ड ट्री, कटिंग करने का साथ साथ ट्रीज का अंदर सैप रहता, मॉइस्चर रहता, उसको सुखाना पड़ेगा। इसी घटना को सीजनिंग ऑफ टिम्बर बोला जाता। The following two methods are commonly used for seasoning of seasoning। दो टाइप का होता, टू टाइप्स। नेचुरल सीजनिंग और एयर सीजनिंग एंड आर्टिफिशियल सीजनिंग और किल्न सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग क्या है? दिस मेथड ऑफ सीजनिंग द वुड इज सिंपल एंड चीप बट it is very slow. It requires 60 to 90 days for soft wood. नेचुरल सीजनिंग में बहुत दिन टाइम लगता। बीज को कटिंग करने के बाद उसको 60 से 90 दिन तक रखना पड़ेगा। और आर्टिफिशियल सीजनिंग क्या है? इट इज द क्विकेस्ट मोस्ट ऑफ वुड सीजनिंग एंड कीप्स द मॉइस्चर कंटेंट्स under control. This seasoning, the seasoning by this method generally takes 4 to 5 days under normal condition. नॉर्मल कंडीशन में ये 4 से 5 दिन तक, 4 से 5 दिन तक टाइम लगेगा। इतना जल्दी का मॉइस्चर हट जाएगा और ये सुइटेबल फॉर यूज हो जाएगा। अभी देखता हूँ टिम्बर का अंदर कुछ डिफेक्ट रहता। डिफेक्ट इन टिम्बर क्या होता? हार्ड शेक। दिस डिफेक्ट यूजुअली ऑकर्स इन ओवर मैच्योर ट्रीज एंड इज caused due to shrinkage of the heartwood। ये मैच्योर का उम्र ज़्यादा हो जाएगा तो हार्टवुड डिफेक्ट हो जाएगा। स्टार शेक। दिस डिफेक्ट इज मोस्टली caused by severe frost or by severe heat of sun। It is mostly confined to sapwood। क्या इस टाइम बहुत ही धूप का तेज रहता, उस टाइम स्टार शेक हो जाता। टॉप शेक और रिंग शेक। दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग winds। स्ट्रॉन्ग winds जब तेज से हवा चलता, which destroy the trees or
due to excessive frost, which affects the moisture present in the trees when it is still young. यह strong winds के कारण होता. Not. This effect is caused by the roots of small branches of trees which are embedded in the stem with the formation of circular rings at right angles to those of the stem. The knots may be leaf knot or dead knot. ये भी very very important है. Small branches. Roots of small branches ये सब ट्री का होता है. Oxiness. This defect is caused due to over maturity and unventilated storage of the wood during its transit. Over maturity and unventilated storage. इसका दौरान ये घटता. Honeycombing, very very important. This effect is caused during seasoning of timber. टिम्बर को जब सीजनिंग करा जाता उस टाइम हनी कॉम्बिंग घट सकती. ड्राई रॉट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. दिस इज कॉज्ड बाय फंगस. जो फंगस है कि पतंग रहता, इंसेक्ट रहता, इसका दौरान ड्राई रॉट होता. वेट रॉट. दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय अल्टरनेटिंग ड्राइंग एंड वेटिंग ऑफ टिम्बर. ड्राइंग, alternating drying and wetting of timber. इसका दौरान घटता. Paints. The paints are coating of fluid material applied over the surface of timber and metals as protective coatings and to improve their appearance. Paints. Paints को हम लोग यूज करता. देखो यहाँ पे देख आप लोग ये देख लीजिए. Different types of paints are oil paints, aluminum paints, bronze paint, asbestos paint, cellulose paints, cement paint, enamel paint, emulsion paint, silicate paint, resin paint, plastic paint, synthetic rubber paint. ये सब पेंट का क्लासिफिकेशन है. Varnish. The varnish is a homogeneous mixture of natural or synthetic. Homogeneous mixture. तो एक ही तरीका रब का मिक्सचर of natural or synthetic resin in particular solvent. इसके बाद देखो the oil varnish and varnish are two types. Varnish are two types. Oil varnish and spirit varnish. The oil varnish is a homogeneous solution of one or more resins in a drying oil, linseed oil, and volatile solvent, turpentine oil. ये जो volatile है ना, volatile मतलब ये वायु का एयर का साथ मिक्स्ड हो जाता ऑटोमेटिक. The spirit varnish is obtained by dissolving the resin, lac or silat in a volatile solvent
वोलाटाइल सॉल्वेंट का एग्जाम्पल है मेथिलेटेड स्पिरिट। ये जब हाथों पे रखेगा तो ये हवा पे एयर का साथ ऑटोमेटिक उड़ जाएगा। लिक्विड्स, a liquid is a solution made by dissolving nitrocellulose resins and plasticizer in a solvent with or without the coloring pigments। यहाँ पे this solvent is usually mixture of ketone, alcohol, हाइड्रोकार्बन। अभी आ रहे डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर के दी डिस्टेम्पर इज मेड बाय मिक्सिंग a drying pigment, chalk or whiting with clean water and ordinary size. It is used on plaster surface not exposed to weather। तो अभी एक दो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर लेके बात करूंगा। The rocks formed due to solidification of molten mass lying below or above the earth surface are called। तो क्या बोलते, अभी मैं बात किया था, लोग देखो पार्ट वन में, जब मैं पार्ट वन में बात किया था इसका आंसर के बारे में, वहाँ पे आप लोग देख सकता रॉक का molten mass। The igneous rocks are formed due to the solidification of molten mass below or above lying the earth surface। ये वाला तो igneous रॉक कहा जाता, तो igneous रॉक कहा जाता, igneous rocks। The sedimentary rocks are formed due to gradual deposition of material like sand, clay, generally by setting water। करेक्ट आंसर बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? The rocks formed due to alternation of original structure under the heat and excessive pressure called metamorphic rock। It is true। Is true। It is true। Granite is an example of igneous rock। igneous rock का एग्जाम्पल बताया ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, बेसल्ट, ये सब। So it is much for today। More when we meet next class। अगर हमारा चैनल वीडियो अच्छा है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए।